वेलकम गाइस। सो अभी हम कपिल सर के साथ थे, तो अब नेक्स्ट एपिसोड में हम थोड़ा सा बात करते हैं लीडरशिप, पावर, रिलेशनशिप और बैलेंस करने के ऊपर कि हम कैसे कर सकते हैं। तो सर, हाउ डज इनकॉर्पोरेटिंग लव इनटू द लीडरशिप इम्पैक्ट अ डायनेमिक एंड परफॉर्मेंस टीम? Okay, so I think you asked three questions in one word. So you asked about leadership, you asked about performance, and you asked about डायनेमिक dynamic team. Okay, so let's touch upon different things. So leadership, जो हमने बात की, it is more about four things which I believe the four pillars for a leader: self management, team management, people management. You can say stakeholder management, and your higher management reporting. If you are doing four things correctly, then you can be considered as a good leader. And leadership is a learnable skill. राइट। Nobody is a born leader. When you start working in that area and then you start thinking like, this is what I really good at. Maybe you expertise in one particular area. Suppose you are very good at self management, like MSD Mahendra Singh Dhoni. We said he is a captain cool. Captain cool means he is very cool in his own control, right? He knows in pressure how to perform. जो लोग का self control nahi hai, they become like aggressive, they start shouting on other people. That shows that person don't have much self control. Okay, number one thing, team skills, it is essential anywhere. So you have to learn it from your college to corporate, everywhere it is important. How you treat other people, the same way the people will treat you. राइट। To give respect to others, the same people will give you respect. That you always need to be in, that you have to set the right boundaries. Number three, client. When it comes to client, you need to understand client is paying you for something. He is not your friend, he is not your buddy, he is not your mentor. He is paying you for something राइट। that you will provide him, and he will pay you for that. So आप जो भी commit करें, you have to keep that your commitment up and tight. अगर आप अपने क्लाइंट से चीट कर रहे हैं, आपने कुछ और प्रॉमिस किया है, आप वो चीज क्वांटिटी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, यू विल नॉट मेंटेन द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. ओके। एक बार के बाद he will not come to you and he will not work with you. That is for राइट। sure, right? Fourth is that if your management is not aware of what is your working style, your team has multiple issues, there's a conflict in team which you are not able to manage, then your higher management need to be get in. They need to solve your team members issue. Otherwise आपके team members, आपके managers, upper management के पास जाके they are saying, राइट। my manager is not able to help me. What it shows that you are not managing it properly, you are not providing the right picture to your higher management, and this way you build your foundation as a this thing. Now let's come to the dynamic team. When we say dynamic team, it can be one location, multiple location, cross functional team, like you are managing team of developers, testers, or support members. You need to understand what are the needs of different people, what they really expect from you, and what you expect from them. So when it comes to team, the actual major important thing is that you should be able to communicate very clearly what you expect them to do, what is the deadline, and how, what is the standard that you are going to measure their performance. अगर आप खुद क्लियर नहीं है तो दूसरों को क्लैरिटी आप नहीं दे पाएंगे. और ये चीज ऐसी है कि बहुत लोग इस पे काम नहीं करते हैं. यू हैव टू बी क्लियर इन योर थॉट्स, इन योर demand, and all those kind of things. So that was the actual parameter of building a diverse team. आपके कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ ईमेल राइटिंग शुड बी वेरी गुड. यू शुड बी गुड एट लिसनिंग एज वेल. क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा मैनेजर हमारी बात सुनता ही नहीं, उसके पास अपना ही एजेंडा है. तो आपको वो परसेप्शन अपने लिए नहीं बनने देना है. आप लोगों की बात सुने एंड देन यू सजेस्ट द सॉल्यूशन जो एक्चुअली हेल्प करता है एक डाइवर्सिफाइड टीम बनाने के लिए. एंड व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट, चेतन? आई इज अ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस. आप अभी दिख नहीं रहे हो मुझे. योर वीडियो इज ऑफ, आई बिलीव. Your background is visible but you are not. Yeah, you are there now. Performance. So performance is kind of thing that, as I covered a little bit in previous section, so performance comes from three things: what you expect from other people to do, what is your criteria, how you're going to measure it, and what's the time deadline for that. Suppose you ask someone that you have to work on this data or you have to work on this work by this time, and I expect these kind of things need to be done.
ओके। अगर वो तीनों क्राइटेरिया मीट होते हैं तो इसका मतलब है कि द पर्सन इज परफॉर्मिंग वेल. You have defined the right KPI for them and you are measuring basis on that. Not basis on that कि आपको कौन गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल रहा है, कौन आपके कौन आपकी बात ज्यादा सुनता है, कौन आपका फेवरेटिज्म आप कितना कर रहे हैं. बट यू हैव टू मेजर पीपल ऑन बेसिस ऑन द परफॉर्मेंस. अगर कोई, अच्छा। if there is someone who has the kind of capacity. बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है, बहुत लोगों को लगता है कि अगर मैं अपने परफॉर्मेंस में अच्छा हूँ, अगर मैं अपना काम कर पा रहा हूँ, तो आई रियली डोंट इन्वेस्ट टाइम ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप, राइट. तो वो राइट सर। अपने आप सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं. दे आर मोर लाइक कि मैं वन मैन आर्मी काइंड ऑफ थिंग. बट इन कॉर्पोरेट और एनी टीम, वन मैन आर्मी डजंट वर्क, राइट. इफ यू आर राइट नॉट सर। देयर, देन अदर पीपल हैज टू टेक ओवर एंड दे हैव टू डू द वर्क. So always see how you can mentor, how you can guide other people, and that will enhance your performance. ओके। So जैसे आप लोग भी कर रहे हैं, you are helping professionals or college students. If anybody is working in their college, they are good at something, or राइट everybody is सर। in corporate, they feel they are good at something. Giving presentation, sharing your ideas, speaking in the meeting, asking right question, these are very important, which creates your visibility, which creates the kind of persona for you that this person is curious and ready to learn, and that actually enhance your performance as well. ओके सर, जैसे अभी आपने बताया रिलेशनशिप के बारे में, तो आप एक एग्जांपल बताएंगे कि लाइक आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन है जो आपको हेल्प किया एज अ करियर, मतलब आपने जो ऐसा रिलेशनशिप बनाया हो किसी टीम मेंबर के साथ। So I will give you two examples. So initially in my career, I was not very good at my boss relationship. Majorly I had very bad boss relationship, because I had that problem that I used to feel I am very good at my work, so I should not allow my managers or other people to tell anything, or that attitude problem was there. And why I'm sharing this, because this is a problem with many people. राइट They सर। feel that they are only the capable person in the team, and their managers should respect them, or give them that kind of advantage. But they are not ready to give the kind of mentorship or the kind of credit to your manager, because it's a win-win relationship. अगर आप सामने वाले को चैलेंज करेंगे, या सामने वाले की बातों को आप इग्नोर करेंगे, then it creates the environment in the team which will make like, but your manager's responsibility is that they need to manage everybody. So do ensure that if you are talking about relationship, you maintain a good relationship with your team members, जो कि जनरली प्रॉब्लम नहीं होती है, लोग बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं. बट अगर आपके बॉस की बात आपको कुछ बुरी भी लगी है, और यू आर नॉट इन अलाइनमेंट विद दैट, but do understand, accept work also, you have to the kind of be participative in your team environment. Second thing, in terms of management, because I interviewed many people also, I promoted many people in my previous team as well. So the important thing is that you should always give credit to the people who are deserving, you feel they have capability and they are performing in your team. Always give priority those people, give them promotion, give them good appraisal, because those people are the kind of successful case studies. और बाकी लोग उनको देख के they feel if yes they can perform, they can grow, then yes there are chances for me as well. अगर आप गलत आदमी को आगे बढ़ाओगे, it will create a damage in your team. Team राइट। culture would not be there. जहां पे फेवरेटिज्म इज अ प्रॉब्लम, जहां लोग अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स को बेस्ड ऑन रिलेशनशिप आगे प्रमोट करते हैं, जिससे बाकी टीम के परफॉर्मेंस पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट राइट। आता है. सर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बैलेंसिंग के ऊपर बोला था, तो लाइक हाउ वी कैन बैलेंस द कॉन्फ्लिक्ट से एज अ लीडरशिप, कि हमारा जो अचीवमेंट है, जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए, वो भी हमारा बैलेंस हो और हमारी लीडरशिप भी बैलेंस हो। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको अपनी केस स्टडी बताई थी, या तो मैं अच्छे से डिलीवरी कर पाऊँ या अच्छे से टीम मैनेजमेंट कर पाऊँ। तो अगर उसे बैलेंस करना है तो उसके लिए मुझे क्या, मतलब हमें क्या वो करना चाहिए? इसका सिंपल सा एग्जाम आंसर मैं आपको ये दे सकता हूँ कि अगर सपोज करो आप अभी अपना स्टार्टअप रन कर रहे हो, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी टीम में ले आते हो, यस सर। राइट. और आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका बहुत बचपन का दोस्त है, आप उसको ले आए बिकॉज ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, बट समवेयर यू आर नॉट श्योर अबाउट द परफॉर्मेंस. अब आपको खाली दोस्ती तो नहीं निभानी, आपको काम भी कराना है, राइट सर। राइट. बट दैट पर्सन इज नॉट एबल टू परफॉर्म, ओके.
अब आपके पास 2 चीज़ें हैं, आइदर आप अपनी दोस्ती निभाते रहिए, काम को साइड में कीजिए, या आप उसको हेल्प करें परफ़ॉर्म करने के लिए, आप उसको समझाएँ क्या एक्सपेक्टेड है, और मे बी समवेयर यू नीड टू टेक टफ डिसीजन एज़ वेल। अगर वो आपकी बात नहीं सुन पाते या परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, यू हैव टू सपोर्ट दैट फ्रेंड एज़ पर योर कैपेसिटी, बट समवेयर यू हैव टू टेल हिम दैट इफ दैट इज़ द केस, देन you have to perform at that level. तो यू हैव टू बी सॉफ्ट, बट यू हैव टू बी क्लियर एज वेल कि क्या एक्सपेक्टेड है आपके काम से, क्योंकि when you're talking about entrepreneurship or business, it's a business place. I am saying here everybody is working to earn something in respond to their time, their energy, their money, all those kind of thing. So अगर आप रिलेशनशिप निभाने के चक्कर में डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे यू आर आंसरेबल, यस राइट? सर। आपने क्लाइंट को कमिट कर दिया कि मैं ये चीज करूंगा, और आपने अपने दोस्त के एफर्ट को भी कंसीडर किया है, लेकिन 2 महीने में आपके दोस्त ने कुछ भी एफर्ट नहीं डाले, देन इट विल गोइंग टू हैम्पर योर प्रोडक्टिविटी। या तो आप उसका काम करेंगे, या आप उसको यू नो हेल्प करेंगे परफॉर्म करने के लिए। यही 2 तरीके हैं व्हेन यू हैव टू हैंडल द काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू परफॉर्म। ऐसा कोई आदमी नहीं दुनिया में जो आगे नहीं बढ़ना चाहता, जो ग्रो यस नहीं सर। करना चाहता। ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि लोगों का माइंडसेट में कहीं ना कहीं इशू है, एंड दे हैव कॉम्पिटेंस इशू एज वेल। ओके। कोई भी काम अगर आप नहीं कर पा रहे हो, उसके 2 रीजंस होते हैं, जो मैंने स्टडी किया है, जो मैंने देखा भी है। देयर आर 2 रीजन यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग। नंबर वन इज द कॉम्पिटेंस इशू, यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, एंड समवेयर यू फील यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू डू दैट। दैट इज नंबर वन। सेकंड इज द इंटरेस्ट इशू, आपको उस काम में मजा नहीं आता, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, और यू स्टार्ट फीलिंग बोर व्हाइल यू वर्क ऑन दिस। ये 2 रीजन होते हैं जब कोई काम नहीं कर पा रहा। तो अगर आपका कोई भी ऐसा है जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि काम जो है, इज दैट पर्सन कैपेबल ऑफ डूइंग इट, एंड दैट पर्सन इंटरेस्टेड इनफ टू डू इट। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 लोग हैं, एक बैकएंड में काम करना पसंद करता है, कोडिंग करना पसंद करता है, एक क्लाइंट रिलेशनशिप में बहुत अच्छा है, राइट सर। उसे लोगों से बात करना बहुत पसंद है, लेकिन आपने दोनों को उल्टे काम दे दिए, क्या होगा उस केस में? दोनों ही स्ट्रगल करेंगे। तो यू हैव यस टू सर। अंडरस्टैंड कौन आदमी किस काम के लिए अच्छा है। एंड सेकंड, व्हेन यू बिल्ड द टीम, ट्राई टू फाइंड द पीपल हु आर नॉट लाइक यू। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ टीम। सपोज आपको टीम बना रहे हैं, आप क्लाइंट रिलेशनशिप में अच्छे हैं, तो यू फाइंड अदर पर्सन हु इज गुड एन एग्जीक्यूशन एट द बैक एंड। सपोज आपने दूसरा आदमी भी ऐसा ले लिया जो क्लाइंट रिलेशनशिप में ही काम करना चाहता है, देन योर अदर डिपार्टमेंट विल सफर। So यस सर। always a team should be a part of diversified people with diversified interest. यहाँ पे इंटरेस्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आपको लीडरशिप में बहुत मजा आता हो, आपको कम्युनिकेशन में बहुत मजा आता हो, लेकिन एक बंदा है दूसरा जिसको कोडिंग में बहुत मजा आता है, जिसको बैकएंड चीजें मैनेज करने में बहुत मजा आता है। तो हर आदमी के लिए एक डिफरेंट रोल होता है हर टीम में, और आपको अच्छे लोग, वैसे लोग जिनका इंटरेस्ट हो उस काम के लिए फाइंड करने चाहिए। सो आई गेस यहाँ पे सबको समझ में आ गया होगा कि लीडरशिप में क्या क्या जरूरत है, बैलेंस कैसे करना है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा सा बात करेंगे हम डिसीजन मेकिंग और माइंडसेट चैलेंज के ऊपर। श्योर। थैंक यू श्योर। सर। थैंक यू।